अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑन नेशनल कॉन्शियसनेस बाय फ्रांट्स फैनन। नेशनल कॉन्शियसनेस इज़ अ कलेक्टिव अवेयरनेस एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी शेयर्ड बाय अ पीपल ऑफ एन एंटायर नेशन विच इंक्लूड कॉमन हिस्ट्री, कल्चर, वैल्यूज़ एंड गोल्स। नेशनल कॉन्शियसनेस क्या है कि एक पूरी आवाम को, एक कंट्री के लोगों को ये रियलाइज़ करवाया जाए कि किस तरह से एक कलेक्टिव अवेयरनेस दी जाए और सेंस ऑफ आइडेंटिटी दी जाए कि आपकी आइडेंटिटी कितनी मैटर करती है, आपकी हिस्ट्री कितनी मैटर करती है और आपका कल्चर कितना मैटर करता है। Frantz Fanon essay on class consciousness is a part of his important book, The Rest of the Earth, which was first published in 1961. This book is a powerful criticism on colonialism that also serves as a roadmap for liberation movement in colonized countries. Frantz Fanon is a psychiatrist, philosopher discussing the psychological and cultural impacts of colonialism and the struggle of decolonizations. This essay focuses on the development of national consciousness during and after the fight for independence. Six main major points of this essay. The first one is emergence of national consciousness, role of intellectuals, post-independence challenges, culture renaissance, economic independence, pupil-centered leadership. Emergence of national consciousness. National consciousness begins as a unifying force against colonial oppression. It is a collective awareness that unites different racial, cultural, and social groupings within a colonized culture in a battle for liberation. This sense of unity comes from different backgrounds, whether from various regions, ethnic groups, or social classes come together because all suffer under colonial oppression, the desire for freedom from colonizers unifying them. However, Fanon warns that after gaining independence, this shared unity can weaken if the leader don't keep the people united. वो यही बात कहना चाह रहा है कि अगर एक कंट्री जो है यूनाइट हो भी जाता है तो उसके जो लीडर्स हैं वो दोबारा से उसको है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं और दोबारा से उसको वीक कर देते हैं. The challenge is that to keep the same level of solidarity and collective focus on building a better future after the struggle is over. वो कह रहा है कि मेन चीज़ तो यही होनी चाहिए कि एक स्ट्रगल करने से पहले या फिर आज़ादी लेने से पहले आप लोग जिस तरह इकट्ठे हुए थे, आज़ादी लेने के बाद भी वैसे ही इकट्ठे रहें, ना कि आज़ादी लेने के बाद दोबारा से अपनी अपनी जो है छोटी छोटी जगह बना लें कि हम इस पर कब्ज़ा करेंगे, हम इस पर रहेंगे. नहीं, जैसे पहले इकट्ठे थे बाद में भी वैसे ही रहें, तभी आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा. एग्जाम्पल देखें. During the Algerian War of Independence against French colonial rule, diverse groups within Algerian society united to fight for a common goal. This collective struggle built a sense of national consciousness among Algerians. Role of intellectuals. Fanon sees intellectuals like writers, thinkers, and educated leaders as important in a fight for freedom. They help and shape ideas about independence and encourage the people to join the goal. These intellectuals often bridge the gap between urban and rural areas, bringing different groups together. However, after independence, Fanon becomes an enemy of many intellectuals. Instead of continuing to work for a people, they often lose touch with the struggles of everyday citizens and focus on personal gains. इंटेलेक्चुअल्स जो है राइटर्स थिंकर्स को कह रहा है कि आप लोग काफ़ी जो है अगर साथ दें बिल्कुल ऑनेस्ट हो के तो आप लोग जो है इंडिपेंडेंस की तरफ मुल्क को लेके जा सकते हैं. लेकिन आजकल हर कोई अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है, हर कोई जो है पर्सनल गेन लेना चाहता है. Fanon believes that intellectuals must stay connected to the public and the work to build a fair society for everyone, not just for themselves. सिर्फ अपने लिए काम ना करें अपने फ़ायदे के लिए, बल्कि लोगों के लिए भी इन्हें काम करना चाहिए. तो ये बहुत इंडिपेंडेंस की तरफ बहुत बड़ा हाथ होगा. एग्जाम्पल देख लें. In India, many writers like Nehru used their writing and speeches to show the vision of the independent India. They focus on unity and helping to shape the national identity. Post-independence challenges. After independence, Fanon believed that many newly freed countries face difficult challenges. जो कंट्री हैं वो इंडिपेंडेंस हासिल करने के बाद भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. ड्यूरिंग द फाइट ऑफ फ्रीडम, पीपल आर यूनाइटेड बाय द कॉमन goal of ending colonial rule.
But once independence is achieved, different groups like racial groups, region, and social class starts to divide again. Fanon is particularly critical of the new middle class, which instead of working for a benefits for the whole nation, often wants to replace the colonizers and keeps the same systems of power. This led to corruption and inequality, disappointing the people who fought for true freedom. Fanon argues that these challenges can only be overcome by strong leadership that keeps the focus on the people's needs. Example, Ghana, the first African country to gain independence in 1957, faced significant challenges in national building. Culture renaissance. Under colonial rule, the culture and identity of the colonized people are often erased and marginalized. Fanon believes that after gaining independence, it's important to restore and celebrate the culture, tradition, and the history of colonized people. This cultural revival helps the people to regain pride and confidence in who they are. एक कल्चर रेनेसांस जो है वो लोगों में होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से हैं, हमारा रीजन क्या है, हमारा कल्चर क्या है और हमें कैसे अपने कल्चर को जो है वो सेव करना है. But Fanon also warns that this shouldn't about simply looking back to the past. The goal should be to mix traditions with modern ideas, creating a culture that looks forward and solves current needs while honoring the past. Toni Morrison, beloved, where Sethi, the protagonist, is struggling with trauma of slavery, which has erased for her cultural roots and identity. Sethi tries to reconnect with her past and rebuild a sense of belonging. South Africans are also struggling to reclaiming their identity. Economic independence. Frantz Fanon argues that real independence is not just about gaining political freedom, it's also required economic freedoms. Even after political independence, many countries remain dependent on their former colonizers through trade. इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमें एक कंट्री ने अगर आज़ादी हासिल कर लिया तो उसे चाहिए कि वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी हासिल करे. बहुत से कंट्री जो हैं वो कि अब आज़ाद हैं, लेकिन वो कर्जा ले लेते हैं, डिफरेंट किस्म के काम छेड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो फिर भी अंग्रेज़ों के अंडर रह के ही काम करते हैं. तो वो कहना चाह रहा है टू ट्रूली बी फ्री दीज नेशन मस्ट टेक कंट्रोल देयर ओन इकोनॉमिक, कि उन्हें खुद अपनी चीज़ें सारी जो हैं बनानी चाहिए, ना कि किसी से कर्जा लें, किसी से बिल्डिंग्स वगैरह के पैसे लें. Stop relying on foreign countries and develop industries that benefits everyone, especially the poor. Economic independence is important for building a fairer society. People-centered leadership. Fanon argues that leaders in newly independent countries must put the needs of the people first. जो कि कह रहा है कि डिफरेंट किस्म के कंट्रीज़ होते हैं, उसमें लीडर्स को चाहिए कि ना कि अपनी ज़रूरियात को आगे रखें, सबसे पहले आवाम की ज़रूरियात को आगे रखें. A true leader should listen to the people, understand their struggle, and work to create a society that serves everyone equally. Leaders should prioritize generating fair opportunities, maintaining justice to avoid from injustice and oppression. एग्जाम्पल देख लें. हो ची मिन, लीडर ऑफ वियतनाम, struggles for independence from French and later Americans, maintained a close relation with the Vietnam people. Conclusion. Frantz Fanon on class consciousness explained the challenges that faced by independence. True freedom isn't just about remaining colonizers, but creating a fairer society. He focuses on unity. Fanon wants new leaders who copying colonial system for personal gain. Instead, nation must prioritize equality, justice, and well-being for all citizens to fulfill the idea of liberation. So I'm done this video. नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.